ओडेंस छोड़ रहा, तो कुछ बताओ। तो अच्छी फीलिंग नहीं है, लेकिन बस छोड़ना पड़ेगा क्योंकि अभी लास्ट मंथ चल रहा है और अपना इसके बाद जो है ना आगे मूव करना है, नेक्स्ट जॉब भी है। अच्छा तो नहीं लग रहा लेकिन जाना पड़ेगा। हाँ, कहीं पे पहुंचने के लिए कहीं से निकलना ज़रूरी है। असल में मेरी सेम फीलिंग्स हैं, जैसे मेरे चाइना से निकला था तब भी यही फीलिंग्स थी, अभी ओडेंस से जा रहा हूँ तो तब भी सेम फीलिंग। तो ओडेंस के बारे में कुछ स्पेशल यादें, बातें जो आप बताना चाहें हमारे दर्शकों को। अच्छा वक्त गुजरा दर्शकों को क्या बताना, एक 3 साल गुजरे एक सिटी में और माहौल का और बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है कि आप जो है ना एक पूरा एक अपना एक बेस छोड़ के जा रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा बुरा फील होता है, लेकिन आगे जाके पैसा भी तो कमा रहे हैं। ये रहा हमारा बिजनेस। अभी भाग मोनो पता लगे फिर मैं आते मोबाइल उठा के मैं खड़े बच मेरा मोबाइल। मुझे लगा साला तू रहेगा एक दिन, अपन मैं आऊँगा और ये ट्रम में बैठूंगा। हाँ यार, ये चल पड़नी थी, जनवरी का था, ये कोविड की वजह थोड़ा काम स्लो हो गया और अभी काम जो है बन गई। सीधा पैसेंजर के साथ टेस्टिंग करते हैं, ब्रिज गिर जाता। पता लगे बस हाँ नहीं 6 to 11 is gonna 6 in the morning पिकअप। हाँ। पहले ही अंदर था। और फिर पाकिस्तान घूम रहा है। बाइसिकल प्राइस 30,000। बाइसिकल स्टोरेज टायर। नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक। चलो इधर विस्की लेनी है अपनी। विस्की विच विस्की एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव विस्की इन डेनमार्क। फिर फाइनली हमने सेलेक्ट की है जॉनी वॉकर डबल ब्लैक विस्की। प्राइस अराउंड 269 krona मीन्स इंडियन करेंसी 3000 रुपीज़ ओनली। इट्स क्वाइट चीप।
बाय। हाँ सुनो भी बोलते हैं ना इसके साथ अच्छा ये बताओ क्या नाश्ते में क्या खाना पसंद है ब्रेड के साथ हमें सिर्फ वो लेना है ब्रेड फुल और ये वो और ये क्या है? वो ये जो क्या उस दिन अपन हम उस दिन अपन तेरे को बड़ी पसंद आ रही है अगर कहते तो ये ले सकते हैं अपन ये अगर वो ये आप क्या ही देख
डेनमार्क की फेमस ट्रम आते हुए इधर भी आ रही है